Assalamualaikum everyone. Today I'll be continuing with February March 21 paper 1, and I've done 7 questions in the previous video, which I'll put the link in the description. And now let's move on to the question number 8 and onwards. Alright, so VO2Cl reacts with NaI under acidic conditions. This is the equation. The oxidation state of Cl is -1 in VO2Cl. Okay, so the oxidation number is -1 over here and over here. So let's find out -1. This is -2, -1, -2, and -2, this is +4, and this is -4, -1, 5, and so this is +5. Alright, now we have to which row shows about this reaction is correct. Vanadium is oxidized, so it is gaining an electron, so it is reduced. Iodine is, let's see, -1 and +1 and 0, so -1 and 0, it is losing an electron, so oxidized. Now you need to know कि मैंने अभी कर तो दिया है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होएगा और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होएगा. That means कि when an element is gaining when an element in a compound is gaining an electron, तो क्या होएगा, रिड्यूस हो रहा होएगा वो, और जब लूज कर रहा होएगा तो दैट इज ऑक्सीडेशन. और इधर ये हमने कैसे निकाला, फॉर एग्जाम्पल VO2Cl is the formula. So Cl is -1, and we know oxygen is always -2 most of the times basically, and the overall charge over here is 0 because there is no overall charge written. So X is for V -4, 2 into 2 is 4, -1 is equal to 0 because overall the charge is 0. So X is -5 and X is equal to +5. So over here it's +5. And the element which is occurring, an atom which is occurring as an element basically, जिसके साथ और कोई एटम नहीं अटैच्ड, that is always 0 क्योंकि उसका overall charge is always 0. Now let's move forward. In which reaction is water behaving as a Bronsted-Lowry base? So what is a Bronsted-Lowry base? Proton acceptor. Alright, now let's see. Water is behaving, so water is accepting a proton, H2O. No, this one is, let's see, H2O, H3, proton acceptor. This can be 1, and over here the protons are same, and H4 and COH2O5. So over here this is the water is not accepting an electron because H2 के H2 ही रह रहा है, in fact O जा रहा है, ठीक है. और इधर जो है COH2O6 में the number of H hydrogen atoms are not changing, but over here only they are changing, so this is a proton acceptor. आगे चलो, आगे क्या कहता है. A large excess of marble chips is reacted with 25 centimeter cube of 1.0
HCl at 40 degrees. How is the result different when the reaction is repeated with 60 centimeter cube and this concentration? All right, तो PV is equal to nRT कर लेते हैं. PV over nRT is equal to, अच्छा ये कर लिया हमने. अच्छा नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे. ठीक है, तो और किस पे डिपेंडेंट होता है? वॉल्यूम पे आई गेस. अच्छा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी प्रोडक्ट मिलेगी. ठीक है, ये मोल्स निकालने हैं. तो 25 इंटू 1/1000 CV over 1000 0.025 निकलते हैं ये मोल्स. और 60 इंटू 0.5/1000 ये 0.03 निकलता है. ये 0.03 निकलता है, विच मीन्स द मोर प्रोडक्ट्स विल बी मेड. ये होएगा या ये होएगा. अब हमने बताने रिएक्शन फास्टर है या स्लोअर है. वॉल्यूम ज़्यादा है ओवर हियर, बट alright, so the concentration is lesser over here, which means कि इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होएगा. क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेट, अच्छा एक मोल पर DM क्यूब में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 DM क्यूब, और इसके मोल में इतने मतलब हैं, इतने मोल्स, ये मोल्स हैं. ठीक है, और ये एक DM क्यूब है, दिस इज़ 1 DM क्यूब एज वेल, जिसमें इतने सारे जो हैं वो मोल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे. द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद ईच अदर and will gain kinetic energy, and इस तरह they will gain energy to form to break a bond and gain energy to form another bond. ठीक है, लेकिन इधर भी फिर सकता है, 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 और इसमें chances of collision are very less as compared to this one. तो रिएक्शन भी ऑब्वियसली स्लोअर होएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, which says the Boltzmann distribution over a gaseous mixture of ethene and hydrogen is shown. Nickel is an effective catalyst. All right. How does the diagram appear if the same reaction mixture is at a higher temperature? So we know that the temperature, so with the increase in temperature, ये जो पीक होती है ये लेफ्ट थोड़ा राइट पे शिफ्ट हो जाती है और थोड़ा कम होती है, और इसका जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, so the values of so this does not decrease, curve is unchanged. No, the value of catalyzed and uncatalyzed remain the same. So this is the answer because value तो वही रह रही है. Alright.
Now question number 12. Which observations are made when a sample of silicon chloride is added to a beaker of water? Let's deduce the equation in water. So SiO2 plus HCl. HCl के steamy fumes हो गए और SiO2 which is silica or sand इसका precipitate हो गया. तो 12B. Which row is correct? The first ionization energy, you need to look into this. I have no idea because I don't have the periodic table.